हम होंगे कामयाब, we shall overcome, uh, national anthem and all that. And there was also listening to speech like people like me coming and spoiling your mornings. And SIA, so going by this, I thought as a responsible citizen and as a person whom I am wearing this uniform, I should thought that I should, as a brother, as a friend, as a बड़े भाई, कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए. So let me start by introducing myself again. I am Vishnu Praveen, Assistant Commandant. I hail from Chennai, Tamil Nadu. And just like you, when I was in school, I wanted to become a doctor because it's too fancy. सफेद कपड़ा पहन के सब लोग आता है हम लोग. They say they respect us a lot and all that. So I thought I should become a doctor. And next, what happened? I got some 3 to 4 marks less, and I got up into engineering, and I became a software engineer. And again, I thought, okay, fine, let me become something different. Software engineering is not good; it's a bit boring. Though I had opportunities to go to America and all that. मैं सोचा था ठीक है यार कुछ और करूँगा देश के लिए. मैं सोचा ठीक आईएएस के चक्कर आईएएस पढ़ने की शुरू किया. उसके बाद मैं unlucky, I was a bit unlucky. So I got into this, even though it's not that bad, it's still good. So in this, what I learnt is the goal is very, very important. Your goal. Before that I should have asked you, what is the most important thing for you in your life? Somebody from here. What is the most important thing in your life? Just answer, just be cool. It can be, बच्चों आप भी बोल सकते हैं. डोरेमोन, निंजा हथौड़ी. निंजा हथौड़ी जानते हैं ना? जानते हैं? हाँ, यस बोलो. अच्छा, रोज देखते हैं निंजा हथौड़ी? मैं भी देखता हूँ. अच्छा लगता है ना? And yeah, somebody just tell me what is the most important thing in your life? Yes, please. Studies. Very good. You and I study. इधर आ जाओ. And your friend, what's your name, man? Hardik Gupta says aim is the most important thing in your life. Anybody else? Yes. Very good. Your good name, please. Hamza, our friend Hamza said that dreams are the most important thing in your life. Still, I agree with that. And anything, any answers, any other answers? Yes, from the last. Our country. You can't be without your country, and that is the place you are living in. इधर ही रहते हैं तो you can't say anything else is important. Yes. Achieve our goals. Bang on target. Our friend aims and goals. Yes, please. Yes, madam. Sports. It's ultimate thing. Yeah, I agree with your name, ma'am. Dolly. Like a doll she is. She said sports is the most important thing in your life. Yeah, but I have to give it to this guy, and come here, man. I'm giving him a chocolate because he said what I wanted to say. Okay. So goals. I start with the goals. Goals are the most important thing in your life. The goals you choose define what you're going to be. हम लोग ज़िंदगी में आगे जाने के लिए गोल्स बहुत बहुत ज़रूरी है. कहाँ जाना है हम लोग को पता है. सुबह सुबह उठ के आप लोग कहाँ जाना है? बताओ कहाँ जाना है? नहीं, बाथरूम जाना है. So we have to. I'm just joking, but yeah, we know. Only if you know it's a Sunday, you don't have to go to the school. But on other days, you need to go to the school. Only if you know that
you'll be going right there. Otherwise, you'll be going elsewhere. Similarly, in life, you need to have proper goals. A goals as high as Mount Everest. इतना होना चाहिए. हम लोग ये बनना चाहते हैं. हम लोग धोनी जैसा होना चाहिए. धोनी सबको पसंद है. किस किस को पसंद नहीं है? अच्छा, पसंद नहीं है धोनी? पसंद नहीं है? अरे कौन पसंद हो? सचिन. अच्छा, मेरे को भी सचिन पसंद है. Come here, lady. You yourself. First one. Yeah, first. Yeah, come in. I don't have 500 sweets. I was told that 500 people are there. I can't give 500 sweets. What's your name, kid? Shreya. So, just because she said Sachin is her favorite, and my favorite is also Sachin, not that Dhoni. So, okay. And सबसे you should have goals. As I said, you should know what you want to go into become. Only then you will move towards it. And next important thing is preparation for attaining your goals. To goal जाने के लिए, इस जहाँ जाने के लिए आप लोग को ज़रूरी चीज़ होना चाहिए. आप लोग कैसे आते हो स्कूल में? स्कूल बस से आते हो? बस क्या होता है? आप yes? Because your parents. Very good. Again, your students are very intelligent. I don't have to give a speech. So our friend is saying parents and school bus. Yes, right. And I'll put it in another word. It's preparation. To attaining your goals, you must need preparation. Preparation बहुत ज़रूरी है. बिना preparation के लिए आप लोग एग्जाम नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? No. So preparation is very important in your life. To prepare for your goals, 5 people are very important. First, your parents. Next, your friends. Next is God, faith, and your relatives. And last but not the least, you yourself. Faith in yourself. आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. बिना कॉन्फिडेंस से आप लोग सारी चीज़ में मदद करने के बाद भी आप लोग थोड़ा मुश्किल लगता है. So you have to have faith in yourself. Faith is very important. So, and in preparation there are some basic values. Values बोलते हैं you should have basic values to attain your goals. Your friendship, as I told you, friends बनाने ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. मैं से था एक छोटा बच्चे like this in LKG. I'm still friends with I'm now 30 years old. Still I'm friends with my LKG batchmate. I still go with them. I still go out with his kids. I play with his kids. I share his joy. I share his sorrows. I share his happiness and everything. So friend बनाने बहुत ज़रूरी है. Facebook में नहीं है. Facebook में friends बनाते हो ना, वो friendship नहीं है. इन लोग को जानते हैं. Facebook में है सभी? नहीं है. That is good. That is really good. So ऑनलाइन में इंटरनेट में काम करने, इंटरनेट में वीडियो गेम खेलने, वो तो so and for the preparation part I forgot another thing. As another friend somebody told sports, Dolly I think. Sports is very important, and to play a sport you must be fit. Health बहुत ज़रूरी है. Fitness बहुत ज़रूरी है. It will guide towards your goal. If you are only fit करने के बाद भी आप लोग सचिन बन सकते हैं क्या? फिट होने के बाद आप सचिन हो जाएंगे. Right? Only if you are fit you can be somebody like Sachin, right? Yeah. So, and the preparation part, the best preparation for tomorrow is doing your best today. And next comes determination. आप लोग गोल सेट कर दिया, आप लोग प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद डिटर्मिनेशन
करेज और ब्रेवरी एक चीज़ होता है। आप लोग आगे बढ़ने के लिए एक एक स्टेप, आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, अभी सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है, अभी थर्ड स्टैंडर्ड में जाना है, अभी बस मंथली टेस्ट करना है, अभी वीकली टेस्ट करना है, एनुअल एग्जाम, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाने के लिए आप लोग डिटर्मिनेशन एंड करेज एंड फोकस होना चाहिए। बात समझ रहे? बोरिंग तो नहीं हो रहा है? ओके। Before going into the next thing, can anyone tell me who is the first person who climbed Mount Everest? Yes, yes, yes. Kid, yeah, come. Aja, aja. Come. Arey, who climbed Mount Everest? Who climbed Mount Everest? Sir is asking question. ठीक है. That's the right answer. Nobody knows Mount Everest because it's very high, right? You can't see there, and who will know Mount Everest? Who will talk to you? Somebody from here. He's very small, so I couldn't see Mount Everest. And somebody here. Yes, please come. आपका yes, yeah. Bachendri Paul. Okay, Bachendri Paul. And your name, Naina Rajput, ma'am? What's your name, Naina Rajput? Naina. I know the answer. Somebody answer? Yeah, she told the answer. She's right. And ma'am had told the right answer. I want her to come. She said Bachendri Paul. She is the first woman to climb Mount Everest. Just because she is a woman, she told women about women, right? Huh? Thank you. So Mount Everest एक चीज़ है, ये तो 8,000 किलोमीटर के ऊपर है। I mean 8 किलोमीटर ऊपर है, 8,000 मीटर है, 8 किलोमीटर ऊपर है। ऐसे नहीं देख सकते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मतलब जाने के लिए आप लोग बहुत गर्म कपड़ा पहनना है, आप लोग ऑक्सीजन मास्क वगैरह पहनना है। मतलब जाने के लिए 2 महीना होता है, जिसके लिए 1 साल के पहले प्रिपरेशन करना है, बहुत कुछ चीज़ है। सो इसके लिए एक बंदा था, उसका नाम तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी। ये 2 लोग क्या किया था, एक 1953 में 10th को चढ़ाया वो लोग, सिर्फ 2 दिन में चढ़ने के लिए। सो 2 दिन में चढ़ पाएंगे, वो लोग चढ़ गया। So the world knew about them. They knew about this Edmund Hillary and Tenzing Norgay. They took photographs and they were like prized all over the world. So what happened? Nobody knows another guy. 20 years back, 20 years before, there was another guy called George Mallory. इंग्लैंड का है लड़का, वो भी आर्मी का है हमारा जैसे। वो लोग भी कोशिश किया चढ़ने के लिए कोशिश किया, चढ़ के वो आ गया, लेकिन सिर्फ 200 मीटर बचा है, उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया, बस हो गया खत्म, इनका नाम इतिहास में नहीं आया। So he also set a goal, he was also prepared, but he didn't have the determination and courage to reach the top of Mount Everest. Are you getting my point? So only Tenzing Norgay and Edmund Hillary पहुंच गया ऊपर तक. So their name was written in the history books as the first people to climb Mount Everest. So इसके लिए बहुत ज़रूरी है determination बहुत ज़रूरी है. And also it's same as the case with Neil Armstrong. सबको Neil Armstrong जानते हैं because he was the first person to land on moon. दूसरा आदमी कौन है? 3 लोग गए थे मून के ऊपर, जानते हो? आ जाओ कम यस बेटा, नाम बताओ। एडमुंड, अच्छा, एडविन एल्ड्रिन, बहुत सारा। पीयूष के लिए 2 चॉकलेट। Oh my goodness, even I don't know this.
So, and those who got the chocolates, you must share with your friends, right? I told you about friendship. You must share with your friends, okay? अरे आपको दोस्तों के लिए देना है, ठीक है? And as I told you, and this friend Payush told that Edmund Hillary is Edwin Aldrin is the second person who touched the moon, but nobody knows him. Only everybody knows Neil Armstrong. ज़्यादा के ज़्यादा Neil Armstrong को जानते हैं. So the determination to be first in everything, the first in whatever you do, is very, very important. And last is patience. राहुल द्रविड़ जानते हो सभी? राहुल द्रविड़ सब लोग जानते हैं ना? एक वो आप जैसा एक क्रिकेटर है, वो क्या वो एक रिटायर होने के बाद एक स्पीच में दिया था, मैं उसका अभी बोलना चाहता हूँ. एक चाइनीज बम्बू जानते हैं? बम्बू एक जानते हैं ना? इट्स अ ट्री, इट्स अ ग्रास, इट्स अ ट्री, इट ग्रोज फ्रॉम 80 feet, इट गोज इनटू 80 feet. सो दिस चाइनीज बैम्बू होते हैं, उसका गार्डन में प्लांट किया. आप लोगों का गार्डन है? So what he did was he planted the seed in the garden. और प्लांट करके इसका ग्रोथ पीरियड है, बड़ा होता है 5 साल 3 महीने के बाद. 5 साल 3 महीने के बाद वो ऊपर जाता है. So what happens? But the first 5 years, what happens is it just grows 1 millimeter away from the ground. It just 1 millimeter ऊपर ground, उतना ही आता है. लेकिन वो 3 महीने में 3 months में it grows into 80 feet. इसका मतलब क्या है? आप लोग वो 5 साल उसका रूट्स को स्प्रेड किया था नीचे, उसका रूट्स को स्प्रेड किया था नीचे. सिर्फ 3 महीने था इसके पास 80 feet अटेन करने के लिए, वो कर दिया. सो एक चाइनीज बैम्बू का एग्जाम्पल का बोलने के मतलब है पेशेंस. पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी है आपको गोल्स अचीव करने के लिए. आप फ्रेंड्स के ऊपर पेशेंस करना है, आप चॉकलेट लेने के लिए पेशेंस रखना है, सब चीज़ के लिए पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी है. सो दिस एज अ चाइनीज bamboo, you must be really patient to attain your goals and get your friendship, love and affection of your teachers, parents and whatnot, everything in the world, and world is yours. And I finished by saying that तो इतना बोल दिया तो सर क्या गोल्स के ऊपर ध्यान रखना है क्या? ऐसा नहीं है. आप लोग करो, कुछ भी करो, मतलब जो मन है आप लोग करो. You want to become want to play in the sun, you go play. You watch TV, you watch movies, अच्छे movies देखो, अच्छे examples बनाओ. You just make your nation proud. And make sure you don't miss your eye on the goal. And I thank this opportunity given by our respected principal, your respected principal. And I finish by saying that, and whatever you feel, you'll get it. Only that mind is a barrier. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind. Thank you.